a very, very good evening. I'm Rashmi Sinha. I founded Goodwill Initiative, and this is a Goodwill Initiative. And the topic of the day is how do we, where does the responsibility lie for this toxic masculinity that we have been experiencing in the light of the boys' locker room incident that has happened a couple of days ago with our school-going children. So it has been on my head for a couple of days, and I thought, let's talk, just let it bury, let's talk about it. And therefore, we have Vaishali and Arnav with us. Very grateful and thankful to them for joining me today. And I'll just introduce a bit to about these lovely ladies that I have. Vaishali is the Chief Operating Officer of the Gender Lab. She has trained over 3,000 adolescents on gender and leadership. Recently, she won the Real Changemaker Award 2020. Gender Lab works towards empowering adolescents. And Arnaz is a media professional with a certain stint at corporate space in communication. At Blue Ribbon, she gave birth to Media Lab, led to 2 batches of Media Lab fellows, mentored 3 batches of Yes Foundation fellows, Change fellows. So there you go. They are very, very amazing, wonderful young ladies who are working in this field, who can help us and and make us understand, put some light on what's happening. So I'll just share how the flow of the day goes. I will be asking 2 questions from Vaishali and 2 questions from Arnav. And once that part is done, the floor is open. Everybody can join in and ask their questions, and yeah. So that's how it goes. Before that, I would like Vaishali and Arnaz one by one to share about what's their initial thought on this particular topic, and yeah, so that. So Vaishali, will you go first? Sure. Thank you so much, Rashmi, first of all, for having both of us on this platform. Right. So it is our pleasure basically to be able to share our thoughts and also the work that we both of us are doing. तो मैं सोच रही थी कि इस मुद्दे के बारे में शुरू करने से पहले ऐसा क्या हम एक बेस सेट कर सकते हैं हमारे कॉन्वर्जेशन को. सो व्हाइल मेकिंग नोट्स फॉर माई सेल्फ फॉर दिस कॉन्वर्जेशन आई केम अप विद दीज फ्यू स्टेटमेंट्स जो हम बचपन से ही काफी सारे हद तक सुनते आते हैं. So one of that is basically, so these are the statements basically जो boys बचपन से सुनते हैं और लड़कियां भी सुनती है, but here the center of conversation is our boys basically right now. Right. तो मैं एक एक करके वो statements के बारे में बताऊंगी and then I'll connect that with the conversation that we are going to do here. So कुछ एक statement ऐसा है कि ओए तू क्रिकेट खेलेगा क्या मेरे साथ, चल आ जाना, right? The another thing that we hear is वीडियो गेम खेलेगा क्या, फाइटिंग वाला गेम ही है ना, चल मिलके खेलते हैं. मुझे भी बाइक चलानी है मम्मा, मैं जाऊं क्या बाहर खेलने के लिए. फिर मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम किचन का काम मत करो, एक ही बर्तन है ना, मैं खुद धो लूंगी, डोंट वरी. काफी बार ऐसा भी होता है ना कि बॉयज को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों को परमिशन लेनी पड़ती है चीजों को लेकर. देयर आर सो मेनी बॉयज दैट टेल अस कि यार तुम तो लड़के हो, तुम रो क्यों रहे हो, एक मर्द होके कोई रोता है क्या, ये तो सच्ची मर्दानगी नहीं है. So these are the statements that all of us hear, not only boys but also girls, every human being of this society. और ऐसे जो statements है लड़कों को एक ढांचे में बदलने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है खुद की भावनाओं को समझ पाने के लिए. Am I actually allowed to express my feelings? Am I actually okay to be sensitive enough to create a safe space for a girl or for my boyfriends as well? So these are the questions at the age of adolescence boys ask themselves. लेकिन वहाँ पे एक ऐसा माहौल जो घर से हमारे पेरेंट्स या स्कूल के एंड से जो मिलने की आवश्यकता होती है, काफी सारे पेरेंट्स ने भी अपने सोसाइटी से वही सुना हुआ है जिस वजह से वो माहौल उनको पहले नहीं मिल पाता है. सो इसीलिए ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ही रह जाते हैं. So that's what I would like to now introduce about the work that we are doing with adolescent boys. Right. So as a part of the Gender Lab, we run this Gender Lab Boys program. तो इसका उद्देश्य है ये है कि how do we make our boys sensitive enough
towards these gender issues and also create empathy for within them, ताकि वो दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझ पाए. एंड लास्टली जितने भी जेंडर नरेटिव्स हमारे समाज में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी क्वेश्चन पूछ पाए. लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम उनके लिए भी एक सेफ स्पेस को क्रिएट कर सके. सो दैट्स वेयर द जेंडर लैब plays a very crucial role of creating a safer space for boys to be themselves, to be able to ask questions कि मर्दानगी का सही अर्थ क्या है. क्या हम भी रो सकते हैं क्या. मेरे घर पे मैं कामों को काफी अलग तरीके से देखता हूँ, तो मैं क्या इसको इक्वालिटी में के नजरिए से देख सकता हूँ क्या. So these are the things actually which shapes our boys what they are right now. And I'm not generalizing this at all. There are definitely quite a few boys who understand these things, and a large amount of number of boys who are facing challenge to be able to express themselves. So that is where I just wanted to connect this with the recent thing that is happening. And हमारा आज का जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है बॉयज लॉकर रूम के अराउंड, एक सबसे बड़ा शब्द जो हम सभी के जहन में आता है वो है मर्दानगी. मर्दानगी का सही अर्थ क्या है. हमारे प्रोग्राम में भी जब हम लड़कों को पूछते हैं कि मर्दानगी का मतलब आपके हिसाब से क्या है, तो वो कहते हैं कि एक मर्द होना यानी कि गुस्सा एक्सप्रेस कर पाना या मार पाना या किसी को सेव कर पाना, एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करना सिंपली. And these are the reasons why boys are not being able to express themselves, not being able to feel what they are going through, and also not talk about it. And that's where I strongly believe कि जो boys locker room है is not the reason why what boys have been going through. That is not the only reason, but there are so many other factors in our society which has created this situation currently. So yeah. Right, wonderful, beautifully said, Vaishali. Naz, would you like to share your thoughts? Yes. First, I would like to extend my gratitude to Rashmi and everybody who also showed up. And Yeah, I'm feeling really overwhelmed yeah, with so full many house. people joining. Yes. So I don't have a singular take on an issue that is so complex because there's an added layer of the medium, which is the digital space, the online world. And right now it's so inseparable, right? The physical and online, there is really very little separation. And this event also led me to constantly reevaluate कि हमारा notion क्या है of gender violence in the non-physical realm, in the online realm. What does it constitute? And I think more than an opinion or a take, I have a lot of questions that I would like to explore even in this conversation because the locker room is right at the cusp of gender, cybersecurity, and our own consciousness while we're consuming and creating or even engaging with the media. And it lies at a very subtle behavioral domain. Um, and the an hour, I feel an hour is so less to even scratch the surface. And the question when Rashmi asked me, okay, Arnaz, will you speak? So I wondered, I mean, जब poster पे लिखा है, where does the responsibility of toxic masculinity lie? And I was wondering when people ask, what is the role of the media? It is almost asked as if media is an independent, disconnected entity. Yes. And I feel that media is a digital space, it's a technology that enables human behavior. And ये disconnected चीज नहीं है. So जब हम role of media बोलते हैं, we can't dissociate the role of the individual and us as a collective. Right. So I mean, these are the various thoughts. And the other danger that I saw is also the simplification of issue that happens when things like these arise. कि हम किसी भी चीज को we forget seeing the interconnectedness of what leads to what. And I'm sure Vaishali is a more a person of authority who would be able to talk about the gender interconnectedness. And for me,
the intervention lies between this human coming in contact with this digital medium, and how are we even replicating जो हमारे physical realm में है the same things on the digital realm. Right. That is where the context of my Yes. engagement is. Very well put, Anas. There's virtually no difference. Like, I am using the word virtually even here. No difference between the, like, today's world, especially between the, meeting physically or meeting on a digital platform, because we are using so much of it. Even we are sitting together in a, on a dining table. We are at times we are communicating much more easily and conveniently over WhatsApp or other medium, rather than talking to each other. So it has intermingled completely with our lives, and we need to take note of that. On that note, I'll go back to Vaishali and ask my first query. My first question is, Vaishali, do you think when we talk about gender, लड़की लड़का, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोगों ने हमारी हमारी सभ्यता का वास्ता देकर हम लोगों ने ऐसा environment क्रिएट किया है अपने बच्चों के लिए? Because I believe कि yes, all the children who were part of that boys locker room are absolutely on the wrong side, and they should be absolutely punished. But I feel that it is much deeper, and maybe hell lot of other boys of that age are also doing. They're not caught, but they're absolutely part of the whole thing. So क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हम बच्चों को रेस करते हैं, और we don't talk about sex. I mean, it's a big taboo word. We don't talk about sex at all. So do you think that इस जो submerge का subversion है, ये जो दबाने की कोशिश है, that we don't talk about it at all, ये एक रीजन हो सकता है कि हम आज हम इस कगार पे हैं कि कहते हैं ना कि व्हेन यू एक अगर अंधेरा कमरा है, तो अगर आंखें खुलेंगी और रोशनी आएगी तो आंखें चौंधिया जाएंगी, आंखों में too much of light will hurt. So it's like that. So you don't know much. People are not talking about it. At the age of 12, you're not, absolutely no information, no knowledge, and then suddenly at 14, you know everything, and then don't know how to deal with it. So, what do you say? So it's a very wonderful question, Rashmi. I think I would like to start with my own personal experiences here, talking about menstruation, or also simply keeping a pad on the refrigerator or anywhere at the place is a stigma. I mean, that will create a lot of um, discomfort zone at my home. So this is only one example. वहाँ पे अगर हम लड़कों के बारे में देखने जाए तो वहाँ पे घर का अगर खाने बनाने के लिए किचन में अगर जाना है तो काफी इजीली बोला जाता है कि तुम बर्तन मत घसो या खाना मत बनाओ, चलेगा, मम्मी वहां पर है तो वो कर सकती है। फिर उसके अलावा स्कूल में अगर हम एग्जाम्पल देखिए तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल शेयर किए थे। तो हमारी सिर्फ घर की बात नहीं है, लेकिन घर के अलावा हमारे स्कूल के नेचर में भी अगर हम देखें तो काम काफी डिवाइडेड है। हर चीजों को लेके अगर हम देखने जाए तो वहां पर डिविजन है, कंसिडरिंग। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन है हमारा पितृसत्ताक समाज, जहाँ पे पावर नाम की जो चीज है वो पुरुषों को दी गई है और महिलाओं को जो है हमारे समाज के काफी निचले स्तर पे रखा जाता है, क्योंकि शारीरिक स्तर पे या तो फिर घर के किसी भी मुद्दों में जवाब देने के लिए काफी सारी चीजों में माना जाता है कि आप वो डिसीजन को सहलाई से नहीं ले सकते हो, यू वॉन्ट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ डिसीजन. So these were the very few of the examples, and where you asked about having a conversation around sex word. So it is still a taboo. So here again, I would like to bring in some of my experiences when I was in the school. Right. Can you all hear me? Yeah, yeah. So जब मैं स्कूल में थी तो हमको रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में एक चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड में, और लड़कों को लैबोरेटरी में भेज दिया गया था और लड़कियां क्लास में बैठी हुई थी, एंड टीचर ने हमको बस 2 चीजों के बारे में बताया था. सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि पीरियड्स का होने का कारण ये है, आपके शरीर का ये हिस्सा है. नामों के बारे में भी बात नहीं की गई थी वहां पर. एंड दूसरा बताया गया था कि आपको 1 हाथ तक का अंतर रखना है लड़कों से ताकि आप सेफ रहो. But we don't know the reason why we were told to do that. On the other hand, if we have a conversation with our parents, so it's so difficult for them also when a child asks कि भाई एक बच्चा किस तरीके से जन्म लेता है.
again when my entire family had gone to watch this Three Idiots movie, और तब जाके पहली बार पता चला कि बेबी बॉर्न किस तरीके से होता है. I mean, and that was for the first time for me as well, and for my brother. And the immediate reaction of my mother was that यार मतलब ये सब चीजें स्क्रीन पे दिखाने की क्या जरूरत है. So there is no scope of having safe and open conversations at home. And nobody is at fault here, honestly, because nobody has reasons to it. If we ask questions, everybody says that कि हमने ये पहले सुना हुआ है और हमने कभी किसी को पूछा नहीं है. We have never questioned these things, these beliefs, जिस वजह से हम लोग उसी के अंदर रहते हैं. जैसे कि शादी को लेके कैसे काफी सारे रीति रिवाज होते हैं जिनको फॉलो करना होता है. किसी बड़ों ने कुछ चीजें बताई हैं तो हमें वो करना है. So India as a society or as a culture, we still follow those things. Right. और हमने कभी ये सीखा नहीं है कि हम इस चीज को लेके सवाल पूछे कि नहीं पूछे. फिर हम जब वो क्लियर हुआ तो हम कैसे पूछे. So we don't even have a language to question our own Right. parents, and they don't have a language to basically answer these things, rather than saying कि हाँ बच्चे जो है वो कहीं से तो आए थे. So that so recently I was reading some of the articles, and I got to know that our government also tried to basically introduce an adolescence education program in our schools, which was supposed to talk about the reproduction health and sexuality in general. So there were around 13 states who completely said no to adapt to this, the entire thing. And there were so many other schools or institutions who said कि हम हमारे हिसाब से देखेंगे, इससे जो चीज हमको बतानी है हम चीज बताएंगे. So I honestly feel that there was a lot of lack of training from the government's end as well. So it's very important कि जो teachers हैं जो इस चीज के बारे में बात करेंगे आगे जाके हमारे बच्चों के साथ, क्या वो इस बातों के बारे में बात करने के लिए comfortable है क्या. So I think those are the things that we need to first of all resolve and then reach out to our boys and girls. So just wanted to conclude by saying this whole conversation is that there's a very strong relationship between power and patriarchy system, right? And in this whole system, women's body is completely invisible. तो वहां पे अगर उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की जाती है, अगर वजाइना के बारे में बात की जाती है, जहाँ से ब्लीड होता है, जहाँ से हम मेंस्ट्रुएट करते हैं, एंड ऑल्सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है. जब हम उसी को निचला समझते हैं तो हमारे लिए सेक्स ये शब्द कभी भी ऊपर नहीं आ सकता. So what created a comfort zone for me is I went to this attend vagina monologue where they asked us to repeat this word vagina again and again, and that honestly created a safer space for me. Yeah. Like literally in my mind. So I think we as an individual we need to adapt quite a few techniques to be able to create comfort zone for ourselves and then for others. So it's a long way to go, but later on maybe we can share more solutions about it. Yeah. Very well said, and I totally relate to that. So I remember we have a group which we call like vaginas. So yeah, there. I mean, the more we talk about, the more novel it becomes. And so with that, I go to Arnaz with a very specific question. My question is, what is the impact of media on young minds? And songs like मैंने गाने को लिखा है because they can't remember the song. चले जब तू लटक लटक लौंडों पे दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक. This is a Badshah song. So how do we even comprehend this? And the last line says "Aata Maji Satak Satak." There are many bad songs, but this one really hit me because it says when it says my head is crazy, that means I'm not taking any responsibility. I'm not ready to take any sense of responsibility. So how do you respond to that, Arnaz? Yeah, that's like the most pertinent question that comes up जब भी role of media आता है. And I've thought about it, and the entire phrase to describe the song, item song, Yeah. like उस phrase में ही problem है. तुम किसी को already item बुला रहे हो and उसे define भी कर रहे हो. So rather than calling it a problematic song or even a song, it's called an item song. And
I think I also agree with, and also adding on to what Vaishali already spoke about power, and the deeper cut here is autonomy. Like Right, a woman or anybody as a human wants to exercise autonomy over their own selves. right, And the media messages, either it's a song, it's a problematic movie, or any content that's put on media that is gender problematic, um, also comes from a space of exercising power, because तुम objectify करो. And I'm saying कि इसका root पे जाना is more important, because बचपन से um, we've I think now I don't want to make a controversial statement, but it's rooted in parenting, because we've not been taught how to have conversations about our emotions, right. and especially Interrupt you. boys. I'll interrupt you. I'll say, please make controversial statements. It's high time you start making them. Okay. Yeah. So when we don't create that safe space for boys to talk about their emotions, and already have given them a template कि अगर तुम्हें express करना है तो it's either anger, which is also not healthy, lot of negative anger, um, then that is through video games, or it's through cricket खेलना है तो expressions of our emotions, and that in turn uh, will create people who believe that only overpower someone is or objectifying or thought of owning someone is the only way to maybe seek validation or receive love, or because that's the way they've grown up, and that's the space in which they've learned to deal with their emotions. So I feel your media question B is rooted more in development, your psychological development, and how do you um, create those spaces of safety for kids to be healthy psychologically. Yeah, but doesn't it feel that we asked for it? I mean, why would it become so popular? I mean, it's like why are they in the first place? Why are they existing in the first place? Right. So people say कि content हम जनता के लिए ही बनाते हैं, because that's what they like to consume. And I hate to say this, but a majority of people do like to consume because they see no problem in that. Yeah. Because वो उनका normal है, right? I mean हम सबका, because there's a lot of that deeply embedded in me also, Oh yes. right? So and I think going also back to Vaishali's point where she said language nahi hai. So we don't, one, if it's normal to us, we won't question it. And हमारे schooling system में also we've not been taught to question or critically analyze things that are just handed down to us. So yeah, that is why I say that हम subconsciously also buy into this system. And yeah. So I just wanted to make yes, one point Vaishali, just to this. I'm coming to you. Yeah. So with that, I would just add on to the fact that there is a problem, but what can we do about it? So this is the second question to you. What are the changes that we can actively make as a parent, as a teacher, as active citizens of the society? What would it's a more of a, I'm looking for a solution. Yes, I know. But yeah, I mean, at least we can make a start. Okay, sure. I think before answering to that question, I just also wanted to add to the previous question. Because I mean it's like a food basically, right? I mean all of us are in COVID-19, I mean facing this situation. हम सब लॉकडाउन है, तो घर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे ढेर सारा मसालेदार खाना बनाएं और उसको एंजॉय करें. सो आई ऑनेस्टली फील कि ये जो गाने बने हैं वो भी ऐसे ही मसालेदार ही बने हुए हैं, which are really catchy, extremely creatively put basically, and trying their best to objectify women's body, and जिस एंगल से कैमरा और हर चीजों को ढाला जाता है
दिखाया जाता है, so it creates a lot of I think a lot of desire, I would say, in people's mind, and they seek to watch those kind of things more and more oftenly on the television. जब ये चीजें काफी openly वहाँ पर share करी जाती है. So I think that is what I wanted to share. And answer to your question, so honestly, it has been a struggle. जैसे मैंने starting में भी कहा था कि language is something which we all really need to work around. But and there are quite a few small actions, maybe practices that we can experiment. जैसे हम लोग स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज के साथ काम करते हैं, तो वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट कंसेंट एज अ टॉपिक, राइट? कि तो हम उनको काफी सारे ऐसे एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे boys are actually not asking for permission at all, but they are saying it. I think Arnaz can later on add to it more. But those are kind of the examples that we similarly, जब हम रास्ते पे चलते हैं, so we had this one of our participants in voice program who was very extremely honest, and he shared that दीदी मैं हमारे एरिया में लड़कों के ग्रुप के साथ ही लड़कियों को छेड़ता था, उन पे कमेंट पास करता था, उनके नाम जोर से चिल्ला के फिर हम भाग जाते थे. And when he got to know about these concepts of पूछना, कंसेंट लेना, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी कि हिंसक मर्दानगी का मतलब क्या होता है, तो ये जो सारे हमारे एक्शंस हैं जो हम करते हैं हमारे समाज में, बॉयज को हम जो देखते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं हिंसक मर्दानगी के, और बिना परमिशन लिए हम चीजों को कर सकते हैं क्योंकि हम लड़के हैं. There is no other reason to it. This is how it comes across to us in that society. So that's where it is extremely important, being it a parent or a teacher or a principal or any guardian basically, क्या हम हमारे खुद के बिहेवियर में परमिशन लेने वाले बिहेवियर को ला सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे खुद के बच्चे को अगर हक गले मिलना है, तो कैन वी आस्क आवर चाइल्ड दैट इज इट ओके इफ आई हग यू, इज इट ओके इफ आई किस यू, राइट? कैन आई किस यू ऑन द चिक? क्या मैं आपके कंधे पे हाथ रख सकती हूँ या रख सकता हूँ क्या, राइट? जैसे आपने ये वेबिनार की शुरुआत की तो आपने पूछा कि क्या हम सभी का वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या, तो इस तरीके के कुछ प्रकार की चीजें जो है वो हम कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे बड़ों को देखते हुए सीखे, क्योंकि वो हमेशा, मैं भी यही कहती रहती हूँ कि पापा आप ये नहीं करते हो, राइट, तो फिर मैं क्यों करूँ? So this is how we build upon so many behaviors that we see at home. So consent is extremely important, I feel. And उसके अलावा नॉन जजमेंटल कॉन्वर्जेशंस करना घर पे, जैसे कि it's very simple again. At home, when my brother asked if he can go inside and wash the dishes, so my immediate reaction or respond to this from my mother is that don't worry, it's only 1 or 2 dishes, I will do, you don't need to do it. And what he will do is he will sit again, and the argument here is that mom told me that I am not required to wash the dishes, right? So तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अगेन महिला के ऊपर चली जाती है बिना पता चले, और लड़का भी नहीं समझ पा रहा है, तो ये पूरे सिचुएशन में हमको नहीं पता है कि किसकी गलती है क्या है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉन जजमेंटल कॉन्वर्जेशन करें. इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये बोला है तो ठीक है, चलो हम ये ट्राई करते हैं. एंड ऑल्सो डिवाइडिंग आवर वर्क, नॉट कंसिडरिंग कि झाड़ू पोछा करने का काम है वो बहुत ही छोटा काम है तो बहन को करना, राइट? कभी कभी ये भी हो जाता है कि कुछ यमी डिशेस घर पे बनानी है तो फिर लड़के ट्राई करते हैं वो करने का, लेकिन उसके बाद जो साफ सफाई का काम है वो डरता है, राइट? इट अगेन लाइज बैक टू वुमेन ऑफ दैट फैमिली. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच कम्स टू माय माइंड. एंड मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे ऐसा रहा है कि ये कॉन्वर्सेशंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नॉट इजी. इट्स लाइक कि टेकिंग अ रिस्क, राइट? गेटिंग इनटू अ डिस्कम्फर्ट जोन, opening a conversation which has always been a conversation of taboo, जिसके बारे में ना ही सोसाइटी बात करती है, अगर हम बात करने लगे तो लोग क्या सोचेंगे. सो दीज आर द स्टिग्मा, और मे बी हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा माइंडसेट एक बन गया है जिसमें हम रहते हैं, जिस वजह से हम उससे बाहर नहीं आ पाते. सो हेंस आई थिंक कॉन्सेंट, बीइंग नॉन जजमेंटल, टेकिंग रिस्क इज इम्पोर्टेंट. आई फील जैसे बॉयज लॉकर रूम स्टार्ट करना,
I mean, it is like a taking risk, right? It is not something easy. But उनको लगता है कि चल हम लड़के हैं तो हम कर सकते हैं. हम स्टार्ट करते हैं, कौन देखेगा, कौन बोलेगा. तो अच्छा, काफी सारे सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सॉरी टू इंटरप्ट यू या इतना सारा ये बातचीत हो रही है, इस बात पे भी हम थोड़ा सा संवाद कर ले, इंटरेक्शन कर ले कि जो बॉयज लॉकर रूम का जो जो इंसिडेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, क्योंकि वो भी एक दिखाता है कि हमने किस तरीके से अपने बच्चों को जो टच फोन है या स्मार्टफोन है उनको दे दिए हैं, उनके हाथ में एक ऐसा गैजेट दे दिया है जो समाज के लिए एक तरीके से खतरनाक रूप में भी है और एक तरीके से प्राइवेसी को लीक भी करता है, और किस तरीके से उनको एक खराब सोच या जिसको हम बोले प्रखर जी, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग पे आ रहा है. रश्मि आप म्यूट पे हो. राइट. प्रखर जी, आपका सवाल मैंने सुन लिया. तो हम आपके सवाल पे आएंगे और बस हम ये फ्लोर खुलने वाला है और ये सवाल एक सवाल मुझे अरनाज से पूछना है और आपके सवाल को पहले, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और हम आपके सवाल पे आएंगे. थैंक यू सो मच अरनाज, थैंक यू फॉर पुटिंग इट आउट, बिकॉज दो चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट की. एक था और दूसरा ये अभी बॉलीवुड की बात हो रही थी. अरनाज, या उसमें लेकिन सब लोग के सामने. प्रखर जी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. प्रखर जी, ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी. थैंक यू सो मच. सॉरी. Yeah. So Anaz, so वैशाली, you kind of put it out very nicely. दो चीजें आपने बहुत important कही. एक था that consent और दूसरा था we need to talk about it. Conversation that should start happening at home. अरनाज, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो what is the impact of trigger posts? I mean, लोगों को यहाँ I think बहुत सारे लोग हैं जिनको trigger post trigger what is something, what is coming on media that can trigger me at certain level, इसकी understanding भी नहीं है. तो क्या आप इसको introduce करना चाहेंगे इस conversation? Sure. So recently, I came across a video जिसमें animal cruelty था, and there was no trigger warning, and that sparked something in me because I was not equipped emotionally to even look at that or engage with that content. And the trigger warnings are basically indications saying that जो content आपने रखा है, it is of a certain nature. It may contain violence, it may contain images that are troublesome, right? Right. So while talking about trigger warnings, somebody said कि but अगर आप किसी को follow करते हो and then you consent to viewing all of the content that they post, and I said ऐसा नहीं होता because I'm sure I follow you, but I don't consent to see stuff that could is violent, because that is in itself violence. And I'll also deviate a little bit and introduce advertisements, right? They're so natural and they're all around us. But if we see they're so violent in their nature because we don't consent to, these huge billboards right in our faces. हमें पता our psyche in a way that is so insidious, right? So I think even with trigger warnings, with advertisements, with the deeper question is consent. Okay, I'm being fed stuff that I may not subscribe to, or it messes with my brain chemistry, or focuses, creates certain prejudices, biases, opinions, right? Right. Yeah. Okay.
Thank you so much, Arnaz. And now the floor is open. So प्रखर जी का सवाल था with regard to boys locker room और कैसे हम अपने यंग बच्चों को फोन दे देते हैं, मोबाइल फोन दे देते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट ये होता है कि यू नो ऐसी तस्वीरें उनकी ऐसे ग्रुप बनाते हैं और ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं. मोर स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू से कि दे आर टॉकिंग अबाउट रेप्स. आई मीन दिस इज मतलब ये भी कभी कभी लगता है कि पूरा एजुकेशन का फायदा क्या है. दे आर सपोज टू बी स्टार्टिंग इन ग्रेट स्कूल्स एंड एवरीथिंग. आपको स्कूल, आप बहुत बढ़िया स्कूल में जा रहे हो, बड़े स्कूल में जा रहे हो, पेरेंट्स इतना कुछ एफर्ट लगा रहे हैं आपके एजुकेशन और पढ़ाई के लिए ताकि आप अच्छे सिटीजन्स हो. लेकिन एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद योर फोन्स एंड एवरीथिंग. So this is what Prakhar ji wanted to ask. Prakhar ji, am I right? So Arnaz or Vishali, any Yes. would like to take that question? I can briefly add to this. I am not sure अगर मेरे पास इसका 100% फुल प्रूफ आंसर है. लेकिन प्रखर जी, अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रखती हूँ या किसी भी अडोलेसेंट बच्चे के बारे में सोचती हूँ. मैं ऑनलाइन भी एक आर्टिकल को पढ़ रही थी जहाँ पे लिखा गया था कि 13 से 14 साल की उम्र में जहाँ पे एक बच्चे का जो ब्रेन है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट साइंटिफिकली ये कितना ट्रू है, बट डेफिनेटली एडल्ट जिस तरीके से अपने सेफ्टी के बारे में सोच पाते हैं शायद उतना पूरे तरीके से बच्चे कम्प्लीटली नहीं सोच पाते. तो इसीलिए उनके आसपास का जो माहौल है, खास करके पेरेंट्स है जो सब उनके पहले आते हैं और फिर उसके बाद टीचर्स के साथ सबसे ज्यादा टाइम वे स्पेंड करते हैं, तो वहाँ के माहौल पे हम ज्यादा फोकस करें, ना कि उनको ये जो सारे टूल्स दिए गए हैं उनको उनसे कम्प्लीटली दूर कर दिया जाए. इसका सिर्फ एक ही रीजन मैं ये देना चाहूंगी, वो ये है कि उत्सुकता और बढ़ जाती है कि मुझसे ये चीज को और ज्यादा दूर क्यों कर दी गई है. एज अ पेरेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि इस समय पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ही बताइए कि आपके लिए कैसे कौन सी चीजें हैं जो आपको समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट, ये जो टूल आपको दिया गया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये जो सारी चीजें हैं, इनसे आप अपने ग्रोथ में किस तरीके से ऐड कर सकते हो, इस तरीके की अगर बातचीत हम घर पे ज्यादातर करें तो वो बेहतर होगा rather than telling them या तो फिर नॉट गिविंग देम मोबाइल फोन्स. क्योंकि समझो अगर हम घर पे मोबाइल दे देते हैं, सॉरी नहीं देते हैं, हम क्लियरली मना कर देते हैं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें से बुरी चीजें सीखने आती है, तो वो माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है कि ऐसा क्या होता होगा कि मेरे मॉम या डैड ने मुझे मोबाइल नहीं दिया है इस एज पर. और जब बाहर की सोसाइटी में जाते हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो आधे नॉलेज के साथ बाहर जाकर पूरी होती है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बच्चों को आधे नॉलेज के साथ स्विमिंग पूल में कैसे, इट्स लाइक तैरना नहीं आता लेकिन हम स्विमिंग पूल में डाल देते हैं. ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चों को छोड़ देने की जगह पे अगर हम उनके साथ बात करें कि आप इस डिवाइस का किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं. आई थिंक कभी कभार अनकंफर्टेबल भी होता है, नहीं समझ में आता है हम कैसे बात करें, तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से बात करना वुड हेल्प. हाँ जी. इसमें एक ये भी है कि जो जिन जगहों से या जिन जगहों से ये चीजें आई हैं, बॉयज लॉकर रूम, दिल्ली या नोएडा का जो भी केस हुआ है, जो भी हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तारी वगैरह भी की है एज पर न्यूज़पेपर न्यूज. और इसमें दूसरी बात ये भी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन डाली जाए और उस पर कुछ राज्य जो है, कुछ स्टेट्स एग्री है, कुछ एग्री नहीं है, इसी तरीके से यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में बहुत सारे लूप होल्स हैं और जहां पर ये चीज हुई है, जहां से ये चीज निकल कर आई है, तो इसका मतलब वहां पर माता पिता या सोसाइटी के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर ये बातचीत नहीं हुई है कि व्हाट्सएप, इंटरनेट, यूट्यूब का यूज किस तरीके से करना है. कि टेक्निक हमारे लिए एक पॉजिटिव है तो प्लस नेगेटिव भी है, क्योंकि बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द लाइफ. या थैंक यू प्रखर जी आपके व्यू को शेयर करने के लिए. आई थिंक अगर और कोई सवाल है किसी को पूछना है तो वी आर हैप्पी टू टेक दैट एज वेल. Neeti, we can't hear you. Is it okay if I raise a question for Vaishali? One second. I think Neeti is
speaking, so maybe you can come next. नीति, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप टाइप करना चाहेंगी थोड़ा? I can speak for you. Are you able to hear me now? या आप थोड़ा अपने माइक को थोड़ा पास पकड़िए, यहाँ पे पकड़ के। Okay. Are you able to hear now? हाँ, बोलिए। थोड़ा थोड़ा आप बोलिए। Okay. See, here I would like to say that what Arnav was saying, that No, we I have done a doctorate and I have written on the physics curriculum as to what should be taught to the girls. I am in the teaching line since the last 15 years. I have 2 boys of my own, so I have seen both sides of the table. we cannot hear you, Neeti. नीति, मे बी अगर आप ईयरफोन्स निकाल के कोशिश हाँ, करो या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Right. Yeah. So next सवाल सुनील जी, आप पूछ। हाँ जी, there is a question, Shri Kumar here. Yeah. Yes. Else can mute. हाँ जी, मेरा सवाल, my question is, a research scholar currently working on mathematical boys and a Teach for India fellow. So my question, what methodologies and what tools are available with people who are working with gender sensitization, especially with boys, and in the Belt area? रश्मि, आपको क्वेश्चन सुनाई दिया क्या? I'm sorry, Shri. We cannot understand. We could not comprehend it. So अगर आप type। Okay, are you able to listen to me now? Yes, Neeti, very Yes, clearly. Okay. मीनवाइल Okay. एक सेकंड है नीति, मीनवाइल श्री आप अगर आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो so that we can save on time. Yeah. Yeah. Thank you. okay. हाँ Okay. नीति। Yes, my point of view, which I want to put forward, is that I agree with Arnaz when she says that everything is rooted in parenting. I have 15 years of teaching experience behind me, and I'm a mother myself of 2 sons. So I can really say that how parenting is done is very, very important. As I say that, see the girls, how they're brought up, and the curriculum which is followed for the girls, on which I've written my thesis also for my doctoral degree, the issues which are taken up, see, when you say that toxic masculinity, even Ravan, when you see Ravan or when you see Duryodhan, see, toxic masculinity has always been there. The point is how to control it. Ravan took away Sita, दुर्योधन ने चीरहरण किया, क्यों? This is toxic masculinity. So it isn't that in this era only it is there and suddenly it has come up. It is, you see, it has been there, but the boy has to be given certain things and environment at home whereby, because see, the child will always ape his or her parents, and after severe and very fine observation, the child does what the parents are doing. How parents talk to each other matters a lot. How the husband talks to the wife matters a lot. Yeah. So what we have to see is that this girl who's going to become a mother, inevitably, is she taught something about it? Her mother's role, is she told something about it? That what is the role of a mother? What kind of atmosphere does she have to create? What kind of environment at home is needed? A girl is taught for 4 years to be a CA, for 5 to 7 years to be a doctor, for 4 plus 3 or whatever years to be an engineer, MPA. But an inevitable role of a mother, is she even talked about it? So what happens when this girl, who's so career oriented, ultimately gets married? She resents marriage because it's demanding. She doesn't have time. When a child is born, she doesn't have time for the child as well. So you see, the child is lonely. And in this time, when the child is lonely, I find, there were so many children in my class who said, my parents, they have no time for me. So you see, certain things are there which create a very harmonious, good environment at home. So the girl needs to know that her inevitable role of a mother. What is the role of a mother? That is all my thesis is about. Because I believe that the girl earlier
In 1911, I have traced from. It's been 100 years, and earlier it was said that, see, the same curriculum which was being followed for the boys now is being followed for the girls. So what happens is that we are producing tomboys who have no time for house chores, who have no time for the children, who have no time for passing on our cultural values. आज के जमाने में किसको कितनी हनुमान चालीसा आती है, कोई Niti, आरती आती है. So Niti, I would sorry. just say that Hello. parenting is important. Yeah. Yeah. Thank you so much, Thank you so Niti. much. Yeah. Yeah. Shall you taking? Yeah, I just wanted to respond to this by sharing that it's important that house chores is not only women's role. It everybody's role basically. Whoever says that वो चार दीवारी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की जिम्मेदारी है. And the values that we talk about, not all the values are equally helping us to grow forward. So it's important that time के हिसाब से हम बदलाव को भी अपनाएं. That is what I wanted to share. And toxic masculinity is not something that can be changed over a period of time. In fact, COVID has took us back to so many years, I believe. And so many other women movement will have to work hard to again bring back the gender equality where it was maybe 50 days back, है ना? So that is it. और कोई question रश्मि आया है क्या? Yeah. Hello. Yeah. Yeah. Please Rahul this introduce side. yourself. Right. I have two questions. First is कि like pet जो I believe कि the root जो है problem का वो है patriarchy, and understanding patriarchy is important. But like मेरे में I've personal experience से बात करना चाहता हूँ. मेरे घर में like I'm trying to like it's been like last 50 दिन से like मैं घर पे हूँ and I am trying to create an environment जहाँ पे घर का काम हम बांट सकें, my mother and ताकि माँ का जो है काम हल्का हो सके. लेकिन मैं मॉम जो है वही मुझे काम करने नहीं देती है, कि पापा को काम करने नहीं देती है, भाई को काम करने नहीं देती है. वो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम चैलेंज लगता है. और अगर हम फोर्स कर रहे हैं या करना चाहें तो शी बिकम इमोशनल. तो आई टुक स्टेप बैक, और फिर थोड़े दिन बाद मुझे वापस गिल्ट होता है कि यार माँ इतना काम कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं. तो वहाँ पे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट किया जाए घर में, एक तो ये है. एंड सेकंड थिंग कि जो लाइक देयर मेरे फैमिली रिलेटिव्स ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें काफ़ी सेक्सेस जो लाइक मेरे रिलेटिव्स पोस्ट करते हैं, और आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, बट आई ट्राई टू इन्वॉल्व इन अदर कन्वर्सेशन. बट फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि आई फील लेफ्ट आउट पर्सनली. तो बिलोंगिंगनेस वाली जो लेफ्ट आउट वाली जो फीलिंग है उससे डील करना, और बिना प्लेफुलनेस को लूज किए हुए हाउ कैन बी आई माइंडफुल एट द सेम टाइम एंड आई कैन इन्वॉल्व देम इन दोस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस. तो वो स्ट्रगल जो है पर्सनली आई एम फेसिंग. राइट. राहुल, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. स्पेशली एक क्वेश्चन मैं श्री का दे रही हूँ आपको इसके साथ. ही इज आस्किंग व्हाट टूल्स आर अवेलेबल टू एडुकेट बॉयज ऑफ हिंदी बेल्ट स्कूल्स. सो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है. गो अहेड. हाँ, आई थिंक राहुल ने जो चीज शेयर करी, तो राहुल ऑनेस्टली ये हमारे घर पे भी होता है. ये हर घर का करंट सिचुएशन है जहाँ पे द रीजन एक. तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि जैसे महिलाएं और पुरुष दोनों ही पितृसत्ताक समाज के समान स्तर पे विक्टिम्स हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग है जिनके ऊपर ज्यादा असर, डेफिनेटली महिलाओं के ऊपर ज्यादा असर होता है, मैं उसको मना नहीं करूंगी. लेकिन राइट, तो वहाँ पे एंड आई फील कि आप आपके इमोशंस को काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दर्शा पाए हो. सो एक चीज है जो आपने खुद ने शेयर करी कि मॉम काफी इमोशनल हो जाता है, गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस प्रोसेस को रोकें. क्योंकि मेरे लिए एक अगेन एक सिंपल एग्जांपल है. मुझे मेरे
डैड की एक हैबिट थी बीड़ी सिगरेट पीने की, उसको छुड़ाने में 1.5 साल लगा है जस्ट। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उस चीज को लेके गिव अप ना करें। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन हैज टेकन मी 2 to 3 years टू क्रिएट अ सेफर स्पेस एट होम। तो हम 50 दिन के लॉकडाउन में अगर ये सोच के ये सोचे कि हम किस तरीके से ये स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर पाए, तो आसान नहीं है। क्योंकि आपकी मॉम की जो एज है, उन्होंने उतना उम्र घर के कामों में निकाला हुआ है, खुद के लिए पता नहीं कितना समय वे निकाल पाए हैं। तो बहुत जरूरी है एज अ मेल फिगर to be able to empathize fully, listen to her even if she is saying कि तुम बेटा मैं ये मत करो, right? And keep doing what you feel like doing. That is the only thing that I have right now to share. दूसरा क्या था क्वेश्चन? दूसरा राहुल का था श्रीकांत, Like, what is the tool available for boys in Hindi belt? हिंदी belt राहुल का एक क्वेश्चन था। दूसरा मेरा सवाल ये था कि लाइक मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है काफ़ी सेक्सी Yeah. जोक्स आते हैं, लाइक वाइफ पेन पे, और Okay. मैं राहुल उनको मेरे को ध्यान में आ गया है क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली टाइम भी कम है हमारे पास। हाँ एग्जैक्टली। सो रिसेंटली हम हमारे टीम में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड वन ऑफ माय टीम मेंबर शेयर दैट ही इज आल्सो फेसिंग द सेम थिंग, एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि काफी सारा ऐसा होता होगा या हो रहा है। एक तरीका है कि आप उसमें से कुछ लोगों के साथ कॉल पे या जब भी वे आपको मिलते हैं तो आप उनसे बात करके समझने की कोशिश करें। और दी अदर ऑप्शन, दूसरी चीज ये है कि आइसोलेटेड महसूस करना बहुत ही इजी है ऐसे परिस्थिति में, इसीलिए हमारे लिए लाइक माइंडेड पीपल के साथ हम कैसे कनेक्ट में आ सके, एक तो वो कोशिश करते रहना, और दूसरा हम अपने आप को किस तरीके से इस कॉन्वर्जेशन से दूर रखें। इफ यू फील लाइक नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप व्हिच इज against your values, then you should not be a part of it. It is your choice, and as a human being you need to take a choice on your behalf, and it is going to be a tough journey, Rahul, because काफी सारे पुरुष जो है वो नहीं कर पाते हैं, वो इसी पितृसत्ता के प्रेशर में रह के इसका भाग बन जाते हैं, और बॉयज लॉकर रूम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। So I think you need to take your own decision there. Right. Yeah. So Rashmi, मेरे को last question actually हाँ. Arnaz, I'll just ask Arnaz for that. Arnaz, Yeah. would you like to take that Vibhuti's question? Yeah, go ahead. Hello. Yeah, go ahead. Yeah. So Vibhuti ने पूछा है कि how can we use media to talk about topics like sex, such that there can be alternative perspective to media. Okay, so I think how can we talk is to start talking, and even before that, we need to reduce the barriers to entry for women to participate in conversations or participate on media platforms. Because when I was doing my research and I was reading up, one of the things that came up is जब हम digital security की बात करते हैं, तो the onus was put on the women. Like, I have to have a strong password, I have to keep my account private, and because there are all kinds of perpetrators outside, all kind of people outside. So the responsibility is on me as a woman, or any gender who feels or faces gender-based violence. Then who is the onus on? So one is to reduce these barriers to participation, and because technology is only as good as the humans that are using it, and because the digital space was created to democratize the space where information exchange can happen, right? And agar hum individually were not mindful, and the other thing about item songs and objectification of women, we have to go back to asking who are the people who are creating content, right? Because a lot of it is, when we talk about representation of women, are women included in the creation of the messages? And I think, I'm not saying that women are, the beacons of, and they don't have toxic traits in them. I'm saying, can we start somewhere?
And participation and inclusion is one of the places where I feel we can be more conscious and mindful of. Did I answer? It was a little macroscopic answer, but Yeah, but I guess you made a point. There's another question, which is there are a lot of schools and colleges working separately for boys and girls. How do we see this reduced gap of mutual understanding about gender issues as an institution? Isn't it important to see and understand mutual issues closely rather than following respective institutions and organizations? So these are, I guess, very broad questions, and we have very less time. So I would take this opportunity, for the last words for my speakers, because we really have a very less time. Maybe we should do it again. Yeah, Vaishali, Anas, go ahead and say one word. I guess, and I invite everybody to write at least one word, one emotion, what you're feeling right now, over the chat or speak, maybe. Okay, I can maybe quickly share. I think I don't have much to add. It's just that I feel just be yourself. That is what I feel like sharing right now. And it's important that being a boy or a girl, it's important to express yourself. Right. And to parents, it's important to create all the guardians basically. Let's create a safer space for our children. That's it. Right. Anas, everybody else, anybody can speak. I wanted to close with saying that maybe there is not one solution, and this is more like an invitation for people to engage when you're looking at problems, to engage in a manner interconnected, and solutions ढूंढने जाएंगे तो वो become very simplistic and become reductionist. So I urge everyone to do their reading. Right. And I think understand the problem first and then try and look for solutions. Right. Amongst the participants, anybody would like to speak? I can see Akshat is there. So yeah, anybody? yes, yeah. Can I speak? Take one point here, if I'm allowed to. Say a few things here, like say what I was hearing about the topic also. I knew what will be the subject of discussion. Right. But my point is that why should we take it up as a toxic masculinity subject? Because it is very deeply connected with parenting and the kind of environment which we are creating for our kids. And kids mean both sexes. I am not particular about guys or girls. So what I have seen is that there is a big strata of society. I mean, whatever we are passing off as generalizations, right. Actually in India also, if you see, there is an urban crowd, there is a rural crowd. जो मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक जो हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत हद तक गांवों में दूसरी तरीके से उसको देखा जाता है और शहरों में, और जहाँ ये प्रॉब्लम हुई है नोएडा में, वो मैं उसको एनसीआर मान सकता हूँ और एक बहुत ही डेवलप्ड एरिया में हुआ है ये सब कुछ. I would say this is more of a manifestation of something which was present in the past also, but it was not coming out in this form. Now that we are in a digital age, ये समाज की जो कुरीतियां हैं या पेरेंटिंग में जो लैक्यूने है या जो फ्लॉ है, वो डिफरेंट तरीके से बाहर आ रहा है. पहले ऐसा नहीं था कि पहले भी नुक्कड़ था, इस तरह की फालतू की बातें उस समय भी होती थी. उस समय लोग लड़कियां छेड़ते थे बैठ के किसी भी पान की दुकान पे और इस तरह से कुछ हरकत किया करते थे. अब सवाल है, अब ना तो नुक्कड़ रहा ना पान की दुकान रही. अब एनसीआर में कोई वैसे नहीं करेगा. सुनील, आपको थोड़ा क्रिस्प रखना पड़ेगा ताकि इनकेस किसी और को बोलना है तो बोल. हाँ जी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ. अभी क्या है कि इसका मैनिफेस्टेशन इसी तरीके से होगा. हम किसी भी डिजिटल चैनल को बंद नहीं कर सकते. हमको इसमें हार्मोनी लानी पड़ेगी. हमको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो पेरेंटिंग है समय के हिसाब से वो इम्प्रूव हो. और अभी अगर आप मेरे से पूछे तो बहुत हद तक पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर. मे बी बिकॉज मेरे जो लेक्चरर थे MBA में, वो यही कहते थे, यू हैव 3 थिंग्स:
One is your career, one is your spouse's career, and one is your married and happy life. Right. You can choose two of the three. So how do you choose all three of three? That's a challenge. Right. So that's what, on that note, I would like to Neeti, finish would off. you like to Okay, can I? Yeah, Neeti, go ahead. Can I also make some points? Sure, Del. I can't see your name, Yeah. so I'll call you Del. No, my name is Kalyana Krishnan. Good evening, everyone. Hi. Yeah, so I've been following this conversation and it's a well curated discussion so far. So appreciate everyone for that. So I would like to just give 2 or 3 pointers, brief pointers on how we can deal with this. I would like to start with what Rashmi ma'am in her introductory talk said about, she made a point where she said 12 साल की उम्र तक बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता है, and then suddenly at the age of 14 he or she is exposed to everything. Now this points out a very common stigma that, when do we have the talk with our kid? So I would like to point out that it doesn't have to be one single major talk or discussion. It can be a normal rational conversation over a period of time as and when your child grows. And that also takes me to another very valid point, is that, when we talk about, so we all over here agree that this is a very sensitive topic and this needs to be conveyed to both boys and girls in our society. Who does this? Are we leaving sensitive topics, primary responsibility of such sensitive topics, to schools and other stakeholders, or are we doing this as parents ourselves? We need to start asking questions to parents in conversation, saying, is the primary role of a parent only to give birth or to raise children as well? Because see, if parents are going to feel awkward in having this discussion and are happy to offload this responsibility towards schools, there itself creates a trust barrier among kids that, my family is not the correct place to go to talk about the most sensitive aspects that are hitting my emotional needs. So that is a very sensitive point that needs to be addressed. So much for making that point. That was pretty important. Anybody who hasn't spoken? Yeah, I'd like to speak, please, if that's okay. Please go ahead. Yeah, my name is Ashwati, and I've been listening to the conversation as it's going along. Yeah. I have just 2 points, for us to think about. Right. One is that, like a gentleman had just said, that these things used to happen in the nukkards earlier as well. It's nothing new. And I quite believe that boys must be talking about girls and in ways that are not good, even earlier. However, why is there a surge of violence is what we have to think about. Right. I mean, did so much of violence happen earlier? I think somewhere we all feel very unsafe now, which was not so bad in the past. Right. So what is the reason for that? Is it because it's okay, we tell our children that it's okay to harm the other person, that nothing much will happen to you? What is where are the values going down? And that is something that we've got to think about. Right. Thank you. The second thing I'd like to just point out is that this particular topic is connected to law. Yeah. And we don't have enough strict laws in our country to either punish people who harm women and girls. And the second point is that we do not have a law in marriage. Right. So the man is always higher than the woman. The assets belong to the man. Right. The woman looks after the house, looks after the children, right? Does not have time for a career. Right. And as a result, there is that inequality. So we have to look at laws. We should stop, only limiting ourselves to softer, the softer conversation. How do we change the boys? Let that happen in the background, but let's look at the law. Thank you. Okay. Thank you so much, ma'am. We don't have time for any more questions or last words. So I would like to again thank Vishali and Arnaz for coming up and having this conversation, and everybody else here. Thank you so much for this. So we're ending the conversation right now. Thank you.
everyone. Bye. Bye-bye. So maybe you can end the meeting Yeah. from that side. I thought yes. Okay.